Assalamu alaikum students, welcome to our channel. Today we are going to discuss the topic of graphical solutions of equation. आज हम आपके लिए ग्राफ लेकर आएंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, टेबल कैसे कंप्लीट किया जाता है और उसके हवाले से जो जुड़े हुए जो सवाल उनके जवाब कैसे दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. लेट्स बिगिन with no, without any wasting any time. Let's see क्या हमारा आज का टास्क है. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल को किस तरह कंप्लीट किया जाता है. पहले टास्क हमारी है, एज यू कैन सी द कंप्लीट द टेबल. वी हैव दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन की मदद से टेबल पहले से बना हुआ है. एज यू कैन सी वी हैव x -3 -2 -1 0 1 2 3 and their corresponding values of y are given, but as we can see there is a missing value of y. ये वैल्यू हमें ढूंढनी होगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू -3 को जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे देना वैल्यू, आइए देखते हैं. x की वैल्यू -3 है. आप देख सकते हैं मैंने x की जगह पर जहां जहां मुझे x नजर आया वहां मैंने -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया है. आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको. कैलकुलेटर वैसे अलाउ है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एज यू कैन सी आई गॉट द वैल्यू ऑफ y -12. आइए इसको टेबल में फिट कर देते हैं. यस, द टेबल कंप्लीटेड एंड यू हैव सिक्योर्ड 1 मार्क. आइए अब इस वैल्यूज की मदद से हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी. we have these values -3 -12 -2 -3. These are values and I'm going to mark on the graph. Chana value, this is the graph given to us. As you can see, all the necessary things are ready. X-axis, Y-axis are drawn. Every value is marked. जस्ट हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क करेंगे. ये पहला पॉइंट हमने देखिए -3 -12 था. दूसरा पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं -2 एंड हमारे पास 3 आ रहा है. तीसरा पॉइंट हमारे पास है -1 और 6 है. चौथा पॉइंट हम देख सकते हैं 0 3 है. पांचवा पॉइंट हमारे पास है 1 0 है. और उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 2 3 है. और फिर आखिरी पॉइंट है 3 के साथ हमारे पास 18 आ रहा है. ये सारे पॉइंट्स आ गए. अब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हम एक स्मूथ कर्व बनाएंगे लाइक दिस. एज यू कैन सी स्मूथ कर्व फ्री हैंड काम होगा, कोई स्केल यूज नहीं होगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स. नाउ अब आए जनाब, अब हमारी उनकी अगली फरमाइश हमारी क्या है. अब वो आपसे कहते हैं बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जनाब अली वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. जनाब अली आइए देखते हैं हम ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. जनाब ये इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. फॉर दिस पर्पस व्हाट वी गोइंग टू डू, आप नोटिस कीजिए जो कर्व की इक्वेशन हमारे पास दी गई थी उसमें ये दो पार्ट एग्जैक्ट सेम थे. -2 वॉज नॉट देयर, तो हमने उस -2 को अपने राइट पे शिफ्ट कर दिया. देन ये देख सकते हैं ये है वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं. आप देख सकते हैं x³ बिल्कुल सेम है, -4x बिल्कुल सेम है, बट वी नीड +3 एंड वी हैड -2 देयर. That's why I remove this -2 and shift it to my right side. Now I must have 3 because I can see in this equation. So I'm going to add 3 on both sides. As you can see, I added 3 here and I added 3 here. Now this is the equation being completed. As you can see, I'm going to replace it with y. So you're going to have y is equal to 1. These are going to be subtracted and you got the 1. Now we are going to draw this line. जनाब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे और हमारे कैसे ड्रॉ होगा, कैसे आंसर आएंगे. अलबत्ता हमारे पास आंसर्स पहले से आपको दिखा देते हैं. ये हमारे आंसर आने वाले हैं. बट द क्वेश्चन इज कैसे ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, आंसर कैसे आएंगे, आइए आपको शो करते हैं. रिमेंबर वी नीड टू ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 1. लेट्स सी. अगेन द ग्राफ आई एम टेलिंग यू, अगेन द सेम ग्राफ. यू कैन सी आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू once again. Now, I remember I need to draw a line y is equal to 1. As you can see on the y-axis, there are 10 boxes that covers 5.
It means the two small boxes will be equivalent to 1. As you can see, I drawn a line. This is y is equal to 1 line. Now, as you can see, this line intersects the curve at 3 places. It means we are going to have 3 values of x. What are the values of x? Let's see. First of all, check this one. Y is equal to 1. Yes. This is the first value. How much is this? Let's see. This is minus 2.2. As you can see, minus 2.2. The second value from here, let's see what will be the value of second value. That is 0.5. And the third value from here, as you can see, yep, this is the third value, which is 1.7. आपने देखा था मैंने ये पीछे 3 वैल्यूज आपके सामने लिखी थी. Now you can see how did I get this values. This is the way to get the values from the help with the help of the graph. Now draw a tangent at x is equal to 2 and find its gradient. Gradient हमारे पास 8 आया हुआ है. कैसे आया है? Tangent कैसे draw होता है? आइए देखते हैं. Look at this graph. Again, the same graph I'm showing in front of you. The same graph. Again, the points, I mark them and I join them. I'll get this curve. Remember, I asked you to find the gradient. For this, I'm going to draw a tangent at x is equals to 2. How? This is the tangent. But I told you to get the gradient from the tangent. What we do from this point, I will move one step either forward or either backward. But remember, one step. Look at this. I moved one step forward from 2 to 3. This much I moved. Now from here I draw a line such a way it meets the tangent. As you can see, yes, there is a right angle triangle. Now this height will express the gradient of this tangent. How much the height of the gradient? Look at this. Yes, the tangent is 8. Means the gradient of this line will be 8. But the question is, how could I estimate that the gradient is positive or negative? आइए देखते हैं. As you can see, as I move forward, means as I increase the value of x, look at the value of y, it also increases. I repeat, as I increases x, y increases as well. Means both are going in the same direction, both are increasing, means it reflects that the gradient of the 2 points is positive. That's why we will write 8 as the gradient. तो बॉयज आपने देखा किस तरीके से हम ग्राफ की मदद से मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. सी यू नेक्स्ट टाइम. स्टे इन टच. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.